students, I am Govind Upadhyay from Ratlam Public School. In this lecture, we are going to continue our chapter 3, that is linear equation in two variable. And in this video, we will understand substitution method. Chapter 3, exercise 3.3, substitution method. Now, what is a substitution method? Normally, the word substitute clears that when we put value from one equation to another, then it is known as substitute or replace. Let's start one example, then we will understand. I have a question: x plus y is equals to 14. That is question number 1 first. X minus y is equals to 4. I have this question and I have to solve this question by using substitution method. Then this is our equation number 1 and this is our equation number 2. By using any of the equation, we have to find a value of x or y. This is the equation number 1. I am using equation number 1. So x is equals to 14 minus y. So y को हमने ट्रांसफर्स किया, यहाँ पर प्लस y है, सेकेंड साइड में 14 माइनस y. नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन 1 से हमने x की वैल्यू यहाँ पर निकाली है. नाउ फर्स्ट इक्वेशन से हमने जो वैल्यू निकाली है उसे हमें ले जाकर पुटअप करना है सेकंड इक्वेशन में. सेम इक्वेशन में कभी भी पुटअप नहीं करना है. देन पुटिंग value of x in equation number 2. Putting value of x in equation number 2 मतलब एक तरह से हमें रिप्लेस करना है x को या सब्सटीट्यूट करना है. मीनिंग x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हमारे पास इक्वेशन है. देन x को हम रिप्लेस करेंगे 14 माइनस वाई से. तो यहां हम लिखते हैं 14 माइनस वाई. Then minus y as it is, minus y is equals to 4. Sorry, 14 minus y and minus y, minus y and minus y, 14 minus 2y is equals to 4. That is 14 minus 4 is equals to 2y. So value of y is y is equals to 10 over 2. 10 by 2. 2 5s are 10. It means we have value of y is equals to 5. Now हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है. अब हम x की भी वैल्यू निकालना चाहते हैं. तो y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में यहाँ पुटअप कर सकते हैं. आप फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में भी पुटअप कर सकते हैं. बट इट विल बी इजी to find the x from this equation. That's why I am putting value of y in this equation. So x is equals to 14 minus y. Putting y is equals to 5. Putting y is equals to 5 here. What will be the result? 14 minus 5. That is x is equals to 9. So we have solved the equation and the answer is x is equals to 9 and y is equals to 5. Okay, I hope you'll understand this question. Okay, let's start one more question. Okay, I have taken one more example. That is this question number 1, fourth question. This question is the type of fraction numbers 3 by 2, 5 by 3, 1 upon 3, 1 upon 2. Then how to solve it? First, जो भी हमारे पास इक्वेशन है इसको हमें सबसे पहले हमारी जो नॉर्मल इक्वेशन होती है उसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है. दैट्स व्हाई हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें. आप इस तरह से भी इसको भी रिप्लेस करेंगे यहाँ पर तो सॉल्व कर पाएंगे, बट दैट विल बी अ कॉम्प्लिकेटेड. तो हम फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसको कन्वर्ट करते हैं. दैट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. इन इक्वेशन नंबर 1 3x upon 2 and this 5y upon 3 is equals to minus 2. Now here we have to take the LCM. Then
3 2s are 6, and we have to multiply 3 here and 2 here. That's why 3 into 3x minus 5y into 2 is equals to minus 2. That is 9x minus 10y upon 6 is equals to minus 2. And now these 6 will be cross multiplied here. So 9x minus 10y is equals to 6 into minus 2, that is minus 12. These are the new equation formed by equation number 1. That's why we have given equation number 3. Now using equation number 2, x by 3 plus y upon 2 is equals to 13 by 6. Now again we have to take the LCM here. So LCM is 3 2s are 6. Then 2 will be multiplied here and 3 will be multiplied here. That's why 2x plus 3y is equals to 13 by 6. Now this 6 is equal here. We can cancel out with this, but after multiplication. 6 2x plus 3y is equals to 13 into 6. Then dividing by 6, or we can cancel out directly here. Then 6 to 6. So we have equation 2x plus 3y is equals to 13. That is equation number 4 formed by equation number 2. Then we have two equations. This equation reduces into the normal equations now. So we can use substitution from this equation. So by using this equation or this equation, I am using this equation number 3. By equation number 3, 9x minus 10y is equals to minus 12. 9x minus 10y is equals to minus 12. Then we have to find the value of x or y. Again I am finding value of x. So 9x is equals to minus 12 minus 10y. This minus 10 will be goes there, then it will be plus, and x is equals to minus 12 plus 10y upon 9. This is our value of x. Now this value will be put up in equation number 4. So 2 here is x. That's why we have to put this whole value in the place of x. Minus 12 plus 10y upon 9 plus 3y is equals to 13. Now first 2 is here, then we have to multiply it by 2. Minus 24, 12 to the 24 and 10 to the 20y upon 9 plus 3y is equals to 13. So here minus 24 plus 20y plus 3y is equals to 13 upon 9. So I am transferring 3y side of 13. That's why 13 minus 3y. Then 9 को हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इधर. यहाँ पर हमने देखा there is 1 only and here is 9. So after using cross multiplication, 1 will be multiplied here and 9 will be multiplied here. So minus 24 plus 20y is equals to 9 into 13 minus 3y. So minus 24 plus 20y, 9 these are 27, 2, 9 ones are 11, 117 minus 27y. Again rearranging 20y
and 27y comes here, then plus 27y is equals to 117 plus 24. This 27y will be here and 24 will be there. यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ प्लस हो गया. Then 47y is equals to 141. So after dividing 141 upon 47, will get 3. So value of y is 3. Now y की वैल्यू हम यहाँ पर पुट अप कर सकते हैं. Putting value of y in equation number, this is not an equation, we can give this as an equation. In x is equals to minus 12 plus 10y upon 9. So answer will be x is equals to minus 12 plus 10 into 3 upon 9. So minus 12 plus 30 upon 9. That is minus 12 plus 30 upon 9. That is 18 upon 9, so 2. So we have answer of x here. Y is equals to 3 and x is equals to 2 will be the answer of the question. Okay, next one more question we will solve, but in this question I'll solve only the word problem. After that you can use the substitution method to solve the equation further. Okay, question number second. Question number third, second part. Yes, question number 3, second part. That is the larger of two supplementary angle exceeds the smaller by 18 degree. Find them. So, supplementary angle. What are the supplementary angles? The angles which have the sum of 180 degree. Then let the angles be x degree and y degree. We have taken the angles be x degree and y degree. Now the given angles are supplementary, so W, we know that the supplementary angles have sum of sum of 180 degree. So angle x and angle y will be 180 degree. This is our equation number 1. Now second condition, the largest angle exceeds smaller by 18 degree. Definitely the both values are plus here, तो हम किसी को भी larger let कर सकते हैं. Let, तो angles B जो हमने let किया है, यहाँ पर थोड़ा सा और modification करें. क्या कि the larger be x. What changes? The larger angle be x degree and smaller angle be y degree. So according to the question, we have x is equals to y plus 18. y larger angle हमने बोला है x और smaller angle हमारे पास y है, तो smaller angle में अगर मैं 18 और 8 करता हूँ तो वो larger angle हो जाता है. In this we have completed our equations. Now you can solve by using our substitution method as I have explained in this video. Next, one more question for which we can create some equation. Question number 4. The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered, and for a distance of 10 km the charge paid is 105 rupees. Now एक टैक्सी वाला है जो अपने टैक्सी में पैसेंजर बिठाता है,
तो पहले से इंडिकेट कर देता है कि भैया आप मेरी गाड़ी में बैठेंगे तो आपको एक फिक्स चार्ज पे करना है, और वो फिक्स चार्ज वॉट एवर दैट इज हम लेट करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या वॉट एवर उसका चार्ज है। देन पर किलोमीटर उसका चार्ज एक्सटेंड होता है, कि वेदर दैट इज 5 रुपी पर किलोमीटर, 10 रुपी पर किलोमीटर। तो इस तरह से वहां पर चार्जेस टैक्सी वाला लेता है। तो हमारे क्वेश्चन में ये बोला है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड विल बी 105 रुपीज। तो अपन यहाँ लेट करते हैं, लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज एक्स एंड पर किलोमीटर चार्ज बी रुपीज वाई। मतलब जो फिक्स चार्ज है वो एक्स रुपीज लेता है वो, और जो पर किलोमीटर चार्ज है वो वाई रुपीज लेता है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अब आप कुछ सोच सकते हैं, आदमी आया रिक्शे में बैठा या जो भी ऑटो है उसमें बैठा, तो एक्स रुपीज तो ऑटो वाले ने ले लिया, पहले नहीं लेगा बट इट विल बी एडेड। देन 10 किलोमीटर्स 10 इंटू वाई, क्योंकि पर किलोमीटर चार्ज इंटू किलोमीटर्स, तो टोटल कॉस्ट है हमारा 105। Then this is equation number 1. Similarly, for 15 kilometers, it will be charged 155 rupees. So x plus 15y is equals to 155. Equation number 2. These are the equations. Now you can solve these equations by using our substitution method, which is explained in this video. I hope आपको substitution method अच्छे से समझ में आई होगी, और ये दोनों क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेंगे इस मेथड के थ्रू। इक्वेशन कैसे बनाई जाती है ये भी इस वीडियो में हमने सीखा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।